Good morning. Welcome to a fantastic Friday. Let today be amazing, available for all of us to teach us, to make us learn, and to make us grow the next level. So, as you all know, I messaged in the group. I'm in a low bandwidth zone, so my camera will not work because I'm working from my mobile. So, we'll request someone to read if possible. Otherwise, of course, I'm here. Just that my voice may go up and down. So, in case that happens, that's just there. So, all right, let's start our morning with Power of Dreams programming and let's take ourselves ahead. Welcome back, Dancing Divas. Welcome back to your morning ritual. All right. So here we are studying a lot about what goes on in our emotional minds, on how we interact. Okay, so how many of us have tried that when we're feeling guilty or when we're feeling in a low emotion area, how to flip ourselves by visualizing what is it that we want to happen, and if we continue to see that, do we change our emotions? Has anyone experienced that? If yes, you can use the chat box and let me know. Meanwhile, you do that. That's nice, Tiffany. And you're successful in doing that because it'll be nice to inspire each other. All right. So now, so people who want more than one careers, how do we go about it? So if you want or need more than one career, what do? I saw a very interesting discussion topic to the scanners section of my bulletin, which talked about subjects you'd like to study. So in the bulletin board, he'd put up a message which says subjects I'd like to study. Naturally, I went to Rahul sir, your scanner is there on the thing. You have to move your scanner. Yes, thank you. Naturally, I went to college expecting to see variations on what I said as freshman student in college. Look at these amazing subjects. I have to study them all: blowfish and aardvarks, philosophy and soil types, medieval shoemaking. Instead, I saw this. Do you get thoughts about new careers every day? Yesterday, the idea kept popping into my head that I'd like to go back to school to study culinary art. Careers? Who said anything about careers? And then I remembered that most scanners, like most people in general, automatically believe every interest has to be a career. As you know by now, this is a huge problem for a scanner. For one thing, they have too many interests to make careers out of all of them. For another, very few careers will interest a scanner for very long. Fortunately, there are many alternatives. Number one, do one for money, the other for love, the good enough job. The best friend of almost every type of scanner is what I call the good enough job. It isn't your dream job, it's the one that funds your dreams. If a job isn't unpleasant, doesn't eat up more than 40 hours a week, pays well, provides security, it can give you the freedom to do all the things you love on your own time. People complain about unfulfilling jobs until they understand what the good enough job actually is.
And then they feel very different about them. Think of it, a job that doesn't bother you, whose only crime is that it's just not enough to fulfill your life, but it provides money and security and the freedom to fulfill your life in your free hours. That sounds like a great job to me, but I want to love my job. There are definitely jobs that people love, but you often run into problems when you try to turn everything you love into a job. This letter from my bulletin board explains it best. Hugh wrote that I would love to just sit under a tree and read 19th century novels all day. So I decided to become an editor. So I would get paid to read all day. They made me read dreadful stuff. I hated it. And then I tried graduate school in English Lit. They made me write papers. I hated it. So guess what I'm doing now? I work as secretary at a nice place with congenial people, a pleasant walk from my house, and I spend every evening, every Saturday and Sunday, every holiday and vacation day sitting under a tree reading 19th century novels. I now tell everyone about my story. Because if you work 40 hours a week in a month, you will still have at least 3.5 hours every evening, plus 12 hours or more each Saturday and Sunday to sit under a tree and read novels, whatever your idea of heaven is. You just have to accept the fact that you must find some of pleasant and mindless, easy job that will enable you to spend your time off doing exactly what you want. I've been told that I shouldn't be content with a mindless job. And I'm truly happy in mine because I've accepted the fact that no one is going to pay me to do what I love. Sit under a tree and read 19th century novels, although, as I said, I tried being an editor, a graduate student, and even working as in a library, where, of course, I was fired for reading on the job. So I made my peace with that and to do it in my own time. Artists and actors would agree with you completely. They're usually very good at coming up with smart ways to earn a living and pursue their art at the same time. The income producers are all good enough jobs. For example, Harman trained to become an electrician so he could stay in the theater and have a good life too. He's a freelancer like most electricians and takes job only when he wants to. I used to be a waiter, he said. That's not a good enough job. It's so exhausting and often depressing because of the bosses. Since I became an electrician, I'm much happier. There's always work and it always pays well. So we pick up something which is what it is all about. Number two, let's combine our favorite interests with our job. Sometimes a job will pay us to do many things that we love. State or national park employees, if you love nature, you don't have to sacrifice any hope of a good job. You can work at everything from maintaining trails to taking tickets to the gate of a campground. It's a great job for someone who also likes to take photos or write or even have a part time internet business. Speaking of which, start your own business. If you start a very small service business, it won't require much investment. And there are always ways to keep it from time consuming too, such as making deliveries with your car or turning a van into a wash terrier, pet wash area, or taking cars in the overnight tune-up with returning them to their owners before work the next morning, or being a language tutor for any kind of tutor over the telephone and so on. One mistake most people make is to do the things according to the book. They'll try to write a business plan so they can get a loan with software for a marketing company or a campaign, find an office, the works, and then pray that it all pays off well. But you're a scanner. You know better. You've already had the experience to do so, to scan, to see that you are not in the right place at the right time. Then what? You're already spending a lot of money on, say, golf equipment only to have it gathered dust in your closet after 1 month of use. For that reason, as much as any financial consideration, an enlightened scanner is always careful to put her toe in the water instead of taking out a loan to buy the lake. The best way to test drive a new business is to lower your investment and your expenses to almost nothing, and then give your job a try, give your idea a try. Full disclosure here.
My favorite business starts up doing images of the stock exchange to mind. They bring up visions of push carts filled with apples and bananas. If you already have a business of your own, you can decide where you'll put your time. If you have a good staff, or you can hire someone to take your place while you stay in contact by phone or computer, you have a lot of freedom. This is what Peter, owner of Toronto engineering firm, said. And that's what he did. With his hobby of acting in the theater started turning into a successful career. He hired a manager to start the workload. Rahul sir says pause for a moment. Why is that? See? Okay, sir, I've taken a pause. Okay. All right, so there's we have a little pause. Let's just wait for a couple of minutes. Meanwhile, if anyone wants to share something, you unmute yourself and share. Okay, so we are back on thing. All right. So if you already have a business of your own, you can decide where you'll put your time. If you have a good staff, or you can hire someone to take your place, while you stay in contact by phone or computer, you have a lot of freedom. This is what Peter, owner of a Toronto engineering firm, did when his hobby of acting in the theater started running into a successful career. He hired a manager to share the workload in his business and started gradually shifting his work life from engineering to theater. I have a wonderful family and I intend to take care of them. So even if I make good money in the theater, I'm not letting go of my business. Fame comes and goes, but engineering is forever. In the coming chapters, you'll find that many other career options you can adapt to your particular needs, a double agent or a seasoned scanner, or even a variety on those types. Now that they have some idea of organizing your time and bringing in money, even a special scanner kit designed to help you accomplish all your personal goals and support your interests. So very, very important for us to understand that where are we going? Where are we heading in our life? Where are we going towards? Because if we do not know where we are going, if we do not know that we have some calling for some passion, and if we're not in a place where we think that our job is not good enough, then it will not pay us well. So some tools for people who want to do double the work or who want to do something that they love and something for money, here is where we are. Here are some tools to keep us on track with your double or quadruple life. To start with, as a double agent, you need to make your dream in as always in sight. Even it's half year away or so. So basically, we have to remember कि हमारा एक dream है. चाहे अभी हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, it's always in sight. Until your new lifestyle becomes a habit. You'll lead activities connected with your other life and reminders so you know that you'll be doing what you love very soon. Keeping your dreams front and center can be as easy as putting a one-page calendar on the wall and having a couple of trunks or boxes or closets or corners in your garage. Someplace where you see them every day. Now let's understand the 2-year wall calendar poster. Now, keeping our summer or our seasonal visit to other life front and center is as easy as drawing a calendar on a large piece of paper and putting it on the wall. Now, this one page, a poster type page, whether it's whether it's A3 or whether it's bigger, depends upon you. Now, this is something which is something akin to the guidelines or something akin to the vision map. Let's see. This one page, which is poster type calendar on the wall, can be the difference between I'll never get to that what I love and only 84 days until I leave for Africa.
For most scanners, I recommend a 6-year calendar. You can learn more about that in chapter 3, Scanner Panic. But for a double agent or seasonal scanner, I recommend posting a 2-year calendar with each year broken into the 4 seasons. A single year is all that's strictly necessary. But every time you see it, a 2-year calendar will confirm that you'll be able to live this wonderful life again the following year. One more thing. You should probably put up an identical calendar in many rooms in your office and your home until it becomes natural to think of your choices without it. So, what is happening? We are doing our unconditioning. We are doing our mind, we are playing with our mind in a fashion that it's being conditioned with our dream plan. Now, on this calendar, let's draw a wide band of bright color to block out your divisions of time. For instance, a band of yellow from the fall through the following spring might be your classroom teaching job during the year, and a band of blue would represent your scuba teaching job in the summer. It's important to be able to understand their meaning from across the room. Now, our destination steamer trunks. You should assign one place for all the gear you'll need in your other lives just to make your gear as easy to find. But if you'll also make this place interesting or beautiful, it will make you happy when you're waiting for your upcoming journey. Helen keeps everything she loves about Africa, including a bona fide helmet with a sun protecting scarf hanging down the back, in an antique brass bound wooden trunk with decals of Africa and some replicas of antique steamship decals stuck all over it. A duffel bag will do the trick almost as well. Now, if you go to more than one place, and this can actually include trips to a nearby park to take photos or rented studio to record a song, try having separate trunks for different areas. Each one full of things you love best about each place you go. It helps to get everything you need ready so you can run out of the door at a moment's notice. And although you may have plenty of time to assemble what you need that life you're leading, the psychological effects of knowing you should take off for distant places at any time are truly wonderful. I have an area in my house for my spring and fall forays to my little village in Turkey. In it, I have all the things I want to take with me, including a photo that I promised to give a sheep herder of his family sitting with 2 sheep in the open back of their brightly decorated little truck. A seasonal scanner wrote the following note to me. I've always had different areas in my garage for skis and climbing equipment, nothing very exciting. But now, over each pile of stuff in my garage, I've put a bulletin board where I've pinned gorgeous National Geographic photos of my other lives up there where I can see them so I never forget how wonderful they are. I put up my 2-year-old calendars, 2-year calendars, big ones, with each of my seasonal trips blocked out in a different color. I've actually painted them on cloth so I can fold them up and take them with me. And I put them up in every bedroom I sleep in so that I see them when I first wake up. So what are we doing actually? First thing on waking up, they're seeing their dreams. And as heard before many, many times, words are not as powerful as pictures are. So pictures speak louder than words, which is the reason this lady has done maps and she sees them on a vision board every single morning on waking up, loud and clear. So if your vision board is cluttered with a lot of things, that's why they're saying that do it in a very simple structure, big broad bands with one thing that you really want to do, so that your mind is absorbing that particular thing about you. Now we come to our scanner daybook. I do not know how many of us are actually doing in the scanner daybook. Can I have some answers? Are you really working on the scanner daybook, or is just a concept here that we're reading? Till the time you answer, let me just take you forward. If you must wait for months to travel to the place you love to, or if you're living the parallel life design model and want to touch base with your art or poetry or designs after work each evening, use your scanner daybook as a way to make your visit. Sitting down with your daybook opens wide, open it wide, a favorite pen in your hand, and you're writing your memories or plans for what you want to do. Drawing diagrams or making sketches and doodling will help you
Reach your favorite place no matter how little time you may have. When you've figured out how to pay for your double life, you've set up your calendars and your destination steamer trunks, and you're writing in your daybook, your life will support your dreams. Now, when your life supports your dreams, something important changes in your thinking. All those, all those either or choices leaves your head, and all of the above live there now. So do you understand the power of a scanner date notebook? It's very, very simple. जो हमें करना है वो हम लिखते हैं, not जो हम लाइफ अभी अनफोल्ड कर रही है. So that we are inking that down, we're writing that down. So that whatever we want, we will be very beautifully surprised after a couple of months or a year that whatever we did, checklist, done, 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 done. Yeah, so Anita, it's fine that you're noting down in points. The idea is to write down. So good, great. On the other page is a list that will allow you to do a quick review of all the models, careers, and tools you'll need. Now, when you're done looking at it and perhaps putting a check mark beside an item, therefore further investigation, I'd like you to turn to the next chapter. There you will read about a scanner with more than 2 or 4 or 10 interests pulling her in many directions. She's usually frozen in her tracks. I call this type Cybele, and we've talked about Cybele even before. Now, let's understand how this works. How double agents do everything they love. Okay, now mind this. It says everything they love. Now, life design models for double agents. We talked about the telecommuting model, where half of it can be work from home from our laptops, right? We talked about the school teacher model, where you know that you're working 10 months a year and you get 2 months for yourself. We spoke about a farmer model, wherein you do have your breaks pretty many times when there's no harvest time, you do have your breaks. We talked about the seasonal model, that how this gentleman was doing 4 jobs in 4 seasons and doing everything that he loved. We talked about parallel lives model, where we are doing stuff that we're liking and stuff that and stuff that we're loving. So we're doing double work. Now, careers for double agents, replaceable jobs. No job can be permanent according to this, though I differ. I think one permanent job, which you've spoken about a while ago, and one job that we love is a good idea. Independent work is the most important idea. If you're working for someone, it doesn't really work unless and until you've been given the liberty to work on your own. Now, very important to have highly paid short-term work. So, come time pe zyada paisa aa jata hai, and then if you have even a quiet period, it's okay. Portable jobs is a good idea, where you can work from home on your laptops, wherever, not in a particular city. So that you have time for your dreams. Jobs with built-in travel. So some jobs have like, okay, you'll travel here, you'll travel there, and that's going to be a good idea. The good enough job, where we are going to have like, all right, it's paying us well, it's giving us, financing us. It's not like we hate it, but we're managing it. Or your own small business, whatever your own small business is, whatever you're entrepreneur of, you can do that. And believe me, पढ़ना लग रहा है कि अरे it's not easy, इतना lucky तो नहीं होते, but इसमें से we have been given 7 options. 1 तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं. Now, अब बारी आएगी हमारे स्कैनर टूल किट की. तो बस्टिंग ओपन और आइदर हमने गेम खेला था परसों, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने खेला. उससे बहुत ऑल्टरनेटिव्स आते हैं कि ये नहीं, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. And that is very, very, very powerful. स्कैनर डे नोटबुक, जहां हमने लिखा है कि हमें क्या क्या करना है अभी या फ्यूचर में. This is most important, and believe you me, don't waste your time and do not avoid this. अगर आपने वो गेम नहीं खेला है तो प्लीज उसको एक बार खेल लो बुक से पढ़ के, so that you are equipped, empowered to take it further in life, and whenever required you can play this beautiful game. And to your wall calendar poster, which is something akin to your vision board, but in a very direct way. Why they say calendar poster? Because में broad bands of color दे रखे हैं, उनमें बहुत simplify किया हुआ है, detailed structure नहीं है, just simplify किया हुआ. This is what I want. And then destination stream trunks. So 2 years में हमारा ये भी आता है. So that is what we are going to be understanding. This is what we are supposed to create. So I request every single Sangha Mitra who's here, please, 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 3 things you need to do now if you want to move in your journey forward. Abhi half the book is left. In this half book, if we haven't done the game playing,
if we haven't started the scanner day book, and if we haven't started the 2-year wall calendar poster, हम आगे जाना उतना easy नहीं रहेगा. So please, please, please do it. Tomorrow is yet another chapter, another day. For now, let's do a Surya Namaskar. The Surya Namaskar with mantras. Om Mitraye Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryaye Namaha. Om Bhanave Namaha. Om Khagaye Namaha. Om Pushne Namaha. Om Hiranyagarbhaye Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Adityaye Namaha. Om Savitre Namaha. Om Arkaye Namaha. Om Bhaskaraye Namaha. Salutations to the universal friend. Salutations to the resplendent sun. Salutations to the energy that induces activity within us. Salutations to the one who illumines. Salutations to the sun moving across the sky. Salutations to the giver of strength. Salutations to the golden cosmic self. Salutations to the Lord of the dawn. Salutations to the son of Aditi, the cosmic mother. Salutations to the benevolent mother. Salutations to the energy that we praise, and to the one who guides us to salvation. The sun salutation now with the names of the postures, both in Sanskrit and English. Pranamasan, Hastuttanasan, Padahastasana, left leg back, Ashvasanchalanasana, Parvatasana, and hold this position, and now slowly progressing into the deeper version of Parvatasana, Adho Mukh Svanasana. Ashtang Namaskar, Bhujangasana, Parvatasana, left forward Ashvasanchalanasana, Padahastasana, Hastutthanasana, Pranamasana. On the right side, prayer position, raised arms pose, hand to feet pose, right leg back, equestrian pose, mountain pose, hold mountain pose, and slowly moving into the deeper version of mountain, the downward facing dog. Salute with 8 limbs. Cobra. Press back to mountain. Right forward, equestrian pose. Hand to feet pose. Raised arms position. Prayer pose. One round of the sun salutation with awareness on the breathing. So exhaling our hands to the chest, pranam. Inhaling as we bend back. We exhale as we fold forward. Left leg back, inhale as we're arching back. Exhale into the forward. Hold the breath for knees, chest, chin. Inhale as we arch back. Exhale into the forward. Left leg forward, inhale. This is a back bend. Exhale whenever we bend forward. Inhale as we bend back. Exhale, hands to the chest. And on the right, deep breathing. Exhale. A deep inhale. A long
and exhale. Right leg back with an inhale and exhale. Hold the breath. Inhale and exhale. Right leg forward with a deep inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Wonderful. Now it's time for my favorite book. Let's read Letting Go and let's understand how it's so hyped up that we are holding on to ourselves, our dreams, our wishes, our fears, and we don't let go, and how simple it is to actually let go. It's all about conditioning ourselves, thinking in the right track, and life changes for everyone. All right. We also spoke about why is it that our mental being or our conditioning, a fixed mindset says, I can't, or I won't, or okay, let's do it. So, what is the difference between the two main philosophies, which is I can't and I won't? Another way out of apathy is to look at the payoffs we're getting out of the apathetic attitudes. Now, the payoff, which is usually, it could be either a face-saving excuse to cover up what is actually fear, or it could be just something that you're getting behind and scared and you know you're behind it. In reality, we are very capable beings, right? All of us are very, very, very capable. We know that. But most of us are behind and are worried and are thinking and are programmed into ourselves. I can't do this. I can'ts are really an I won'ts. Behind the I can'ts or I won'ts is frequently a fear. Then, when we look at the truth of what is behind the feeling, we have already moved up the scale from apathy to fear. Fear is a higher energy state than apathy. Fear, at least, begins to motivate us into action. And in that action, we can again surrender fear and move up to anger or pride or courage, all of which are higher states than apathy. Let's take a typical human problem and trace how the mechanism of surrender works to free us from an inhibition. Public speaking is one of the most common inhibitions. On the level of apathy in this arena, we say, oh, I can't possibly speak in public. It's way too overwhelming. Nobody will want to hear me anyways. I don't have anything worth saying. If we remind ourselves of our intention, we will see that the apathy is merely covering up fear. Now, the thought of speaking in public is frightening. It's not hopeless. It brings about a certain clarity. The facts are not that we can't, but merely that we are afraid. So, firstly, it's okay to be afraid, but how to go about it? As this fear comes up and is let go, we become aware of the fact that we have a desire to do the very thing we fear. Now, when looking at the desire, which is blocked by fear and perhaps compounded by some grief over lost opportunities in the past, anger arises. So very often हमें जो करना होता है लाइफ में और हम लोग लगता है कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा, उसके पीछे डर होता है. डर के साथ साथ कई जगह ऐसा होता है कि पहले लाइफ में हमने कुछ चीजें करी और वहां फेल हो गए, तो एक घबराहट भी होता है, या एक ये भी होता है समाज में लोग क्या बोलेंगे, बार बार करता है फेल हो जाता है, बार बार करता है फेल हो जाता है, पब्लिक परसेप्शन भी आ जाता है और उससे गुस्सा भी आता है कि मुझसे ये सिंपल चीज होती क्यों नहीं, सब लोग तो कर लेते हैं. इस सब की वजह से कंडीशनिंग हो जाती है कि भाई मेरे तो बस का ही नहीं है, आई कांट, या मुझसे नहीं हो पाएगा. At this point, we have already moved from apathy to grief to desire and up to anger. Now, in anger, there is much more energy and capacity for action. Anger often takes the form of resentment, such as resentment that we agree to the public speaking and now feel obligated to do it. So, very important to understand. हमने जब first day कुछ दिन पहले पढ़ा था anatomy of emotions में, हमने बहुत सारे इमोशंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे नीचे से ऊपर ग्राफ जाता है, कैसे किसकी एनर्जी लेवल है. एक ऐसा ही चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है पावर बुक में. टुडे आई विल ट्राई एंड सेंड इट.
उससे हम समझ में आएगा हमें कि करेज, हिम्मत, बस वो ही एक डिपिंग लाइन के बीच में है पैरामीटर। अगर हिम्मत है, जज्बा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली हम डिप कर जाएंगे। देयर इज ऑल्सो एंगर अबाउट आवर फियर which has blocked accomplishment in the past, and the anger leads to a decision to do something about it. This decision might take the form of a public speaking course. When we sign up for a public speaking course, we have already moved into the energy of pride in that we're finally taking the bull by the horns and we're doing something about it. On the way to the speaking course, again, more fear will arise. As this is constantly acknowledged and surrendered, we become aware that we have courage in our capacity, at least to face our fears and take action to overcome them. The level of courage has a lot of energy. Now, courage में जो energy है वो बहुत beautiful energy है. क्यों? क्योंकि आपको आप कर सकते हो कि नहीं पता नहीं, और आप में हिम्मत है कि भाई एक बार तो करूंगा, ट्राई तो करूंगा, दोबारा करूंगा, फेल हो गया डजंट मैटर, दोबारा करूंगा ना। जब आपने ये चीज अपने अंदर एहसास ले आए तो आपने आधा बैटल तो वहीं पर विन कर लिया। That energy takes the form of letting go of residual nature. जो भी बचा कुचा डर भी है ना आपके अंदर, उसको भी आपने छोड़ दिया कि अब जो भी है, डर है, गुस्सा है, या बहुत ज्यादा मेरा कुछ है, उसको मैंने छोड़ दिया नीचे और मैं दोबारा ट्राई करूंगा। आई डिजायर, आई हैव अ करेज। एंड जब हम ऐसा करते हैं तो एकदम से हमें क्या आता है, एक्सेप्टेंस, कि जो है अभी है, मैं तो करूंगा, जैसा भी है ठीक है, करने में क्या हार्म है, दोबारा करूंगा, फेल हो जाऊंगा दोबारा करूंगा। Now, with acceptance, there is a freedom from resistance, which has taken the form previously of fear, apathy, and anger. Now, just the minute हमने acceptance अपने अंदर फील करी कि अरे जैसा है जो है बढ़िया है, एकदम से हम फ्री हो जाते हैं। किससे? जिसको हम रोक रहे थे अपने आप को, अरे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, अरे ये नहीं होगा तो वो होगा, डर, घबराहट, लोग क्या बोलेंगे, हम उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। एंड तब हमें क्या फील होता है उस समय? एकदम से फ्रीडम, प्लेजर, एक इकोनॉमिटी, सबका अच्छा फीलिंग हो रहा है, एकदम से कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ऑन द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस देयर इज ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ अदर्स, so that in the speaking class we become aware of the pain, the suffering, and embarrassment of others in the class, and we begin to be concerned about them. So very, very important for us to understand that जो भी पेन से हम गुजर रहे हैं, जिस भी सफरिंग से हम गुजर रहे हैं, जो भी एम्बैरेसमेंट हो रहा है, उस सब से हम ऊपर उठ रहे हैं, बिकॉज अब हमें उसकी इतनी चिंता नहीं है, और हम दूसरों को भी ये देख रहे हैं कि लोग भी इससे गुजर रहे हैं, एंड दूसरों के लिए भी कंपैशन रखते हैं, उससे भी हमारा फियर खत्म होता है। अपनी ही प्रॉब्लम किसी और को देखते हुए, गुजरते हुए देखते हुए, हम उसको भी एहसास करके अपने आप भी हील होते हैं। सो कंपैशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जब ये दूसरों की तरफ हम अवेयरनेस आई, कॉन्शियसनेस आई कि अरे उसके साथ भी ऐसा हो रहा है एंड आई वांट टू हेल्प हिम, मुझे चिंता है उसके बारे में, तब क्या आता है, उससे इमर्ज करता है एक्सट्रीम करुणा, एक्सट्रीम कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स, एंड दैट इज व्हेन वी लूज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब किस बात की, हम क्यों कॉन्शियस हो भैया, सबके साथ हो रहा है, इट्स ऑल राइट। नाउ विद द इमर्जेंस ऑफ सेल्फलेसनेस कम्स मोमेंट्स ऑफ पीस। और जब आप अपने लिए नहीं सोच के दूसरों के लिए सोचते हो ना, तब बहुत अच्छा एहसास होता है कि अरे अच्छा काम करें, दूसरों के लिए काम करें। और जब आई नहीं अटैच ना, एम, अपना चीज अटैच नहीं है, तब जो पीस, जो शांति मिलती है, दैट इज प्राइसलेस। नाउ ऑन द वे होम फ्रॉम द क्लास we experience an inner contentment, a feeling that we have grown, that we have shared with others. आप कभी भी देख लीजिए लाइफ में, चाहे घर को ही देख लीजिए, आई डोंट नो मेन है वुमेन है, आप लोग जो भी है यहाँ पर है, अपने आप को याद करिए, आपको कुछ खाने के लिए बहुत ज्यादा पसंद है, बट आपके बच्चों को प्रॉब्ली ज्यादा पसंद है। उस समय आपको कॉम्प्रोमाइज वाली फीलिंग आती है कि अच्छा लगता है शेयर करके, हाउ डू यू फील? कई लोग बोलेंगे अरे दूसरों के लिए देना पड़ता है, मैं तो खा ही नहीं पाता। अगर ये बार बार होगा तो ऐसा एहसास होगा, पर कभी आप देने पे एक शांति फील होती है, एक अच्छा फील होता है कि अरे शेयर किया ना, अच्छा है, दूसरों को मिला, इट्स इवन गुड। अगर वैसी फीलिंग आ रही है, सो हम अपने आप को भूल जाते हैं, एंड उस मोमेंट पे इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल दैट यू आर हैप्पी फॉर समवन एल्स।
इस समय आप खुश हो जाते हैं दूसरों के अकम्पलिशमेंट्स भी देखकर. So it's very nice. Yes, thank you for writing in it. It gives you, sharing gives happiness. It feels good. Absolutely. Now, when we are sharing our gifts, for example, आपके अंदर एक gift है. You know, for example, सुरेंद्र जी हैं. He's teaching very good, say business का कुछ उनको एक expertise है उनका. और वो बोलते हैं कि today I want to share this. उन्होंने without thinking of himself share किया ये चीज. And 4 लोग को फायदा हुआ. अब 4 लोग को जब फायदा होता है वो शेयर करते हैं तो he feels happy. Now this is when all of us take pleasure in the accomplishment of others. In this state there's a transforming grace. You discover yourself, discover your inner compassion. आपको अपने आप की करुणा ढूंढने को मिलती है. एक फीलिंग आती है of being connected with others, being one with others, and there's a compassion for their suffering. अब अगर उनकी सफरिंग हो भी रही है, you feel compassionate कि नहीं, it's okay. With the full development of this progression, we might then share with others how we had a fear of public speaking, the steps we took to overcome it, the success we experienced, the energy and increase of our self-esteem, and the positive changes in our relationships. This entire progression on the basis of a great deal of power of self-help groups. यही मतलब यही on की जगह is होना चाहिए. That the entire progression is the base of a great deal of power of self-help groups. हम क्यों सारे why do I keep saying कि share करो, have each other's back? क्योंकि हम सब heal करने आए ना अपने आप को, help करने आए अपने आप को. और अगर मेरी प्रॉब्लम भी है और आपकी प्रॉब्लम भी है और आप और मैं दोनों शेयर करते हैं तो हल्कापन फील होता है. हर समय तो जरूरत नहीं होती कि कोच को फोन करें, उससे शेयर करें. आपस में भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं. उससे क्या होता है? डिपेंडेंसी खत्म होती है. लाइफ में हमें इंडिपेंडेंट बनने के लिए एक के बियॉन्ड खोजना पड़ता है, सो दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट किसी एक इमोशन पे या चीज पे. द शेयरिंग ऑफ इनर एक्सपीरियंसेस from the lowest to the highest levels on scale of emotions is one of the most powerful learning, sharings, or development in our life. That which is the beginning seems formidable and overwhelming has now been surmounted and handled well, with the resultant increase of aliveness and well-being. शुरू में जो लगता था कि यार ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो बस की नहीं है, एकदम से वो लगने लग जाता है कि हाँ ये भी करा जा सकता है, इसको भी हैंडल कर सकते हैं. अरे अरे जिंदगी का एहसास हो रहा है, अरे सब बढ़िया हो जाए, डोंट वरी, करते फिर करेज आ जाता है, राइट? सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल ऑफ गुड फीलिंग जोन. And this increase in self-esteem spills over in other areas of our life. And the increase in confidence results in greater material abundance and capability in vocational functioning. एक छोटी सी चीज ट्रिगर ऑफ कर जाती है आपकी सारी लाइफ में. अगर आपने एक जो कॉन्फिडेंस दे दिया, दूसरे को हेल्प कर दिया, उसमें आपके पर्सनल रिलेशनशिप विद योर फैमिली, योर ओन सेल्फ एस्टीम, आपका अपना मनी, आपका अपना अबंडेंस, आपको जो भी पसंद है सब में उसका झलक दिखती है एंड इट बिकम्स बेटर. नाउ इस लेवल पे क्या होता है? Love takes the form of sharing and encouraging others, and our activities are constructive instead of destructive. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है शेयरिंग करना. जो लोग शेयर करते हैं वो लोग लाइफ में ग्रो करते हैं. शेयर करना मतलब क्या कि मुझे जी चैलेंज, कल शेयरिंग आई, आपने ग्रुप में पढ़ा होगा ना, हाउ पीपल आर शेयरिंग द शेयरिंग्स, रिफ्लेक्शंस, कि हाँ मैं ये बोलना भूल गई, या यू नो मैंने ये ऑब्जर्व किया अपने बारे में. एक जना भी शेयर करता है, चाहे वीडियो में, वीडियो इज मोस्ट इम्पैक्टफुल, लिखना में वो लॉस्ट हो जाएगा, वीडियो इज फॉरएवर आर्काइव्ड. नाउ one person also says, हाँ ये तो है, हमारे साथ भी ये तो फर्क है. The happy hormones are released because you're sharing. Now your vibration, your energy becomes so transformational for the others also. That is why I keep saying share all the time, share. And this energy, when it radiates, is turning into such positive infectious energy that उसकी तरफ क्या होता है, पूरा एक feel good factor हर जगह शुरू हो जाता है. Now once we've experienced this progression up the scale of emotions in any one particular area, we now begin to realize that it can be done in other areas of limitations in our lives. एक में हमने अगर वो पाली ना progress, दूसरा भी easy हो जाता है. Behind all of the I can'ts are merely I won'ts. The I won'ts mean I'm afraid to, or I'm ashamed to, or I have too much pride to try.
for fear I might fall. आपने देखा आई वॉन्ट के पीछे क्या क्या है? मुझे डर लगता है, अरे मुझे घबराहट है, अरे मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है, अरे मुझे शर्म आ रही है, अरे नहीं नहीं लोग क्या बोलेंगे, अरे मैं फेल हो जाऊंगा तो सब क्या बोलेंगे. Now, behind that is anger at ourselves and circumstances engendered by pride. जो झूठी pride है ना, ego है, ये बीच में आती है. Acknowledging and letting go of these feelings brings up to courage, and with that, finally, acceptance and an inner peacefulness, at least as it regards the area which has been surmounted. जिस भी एरिया को आपने सरमाउंट किया है, अपने आप को कवर अर्जेब कर लिया है, एकदम से आपको उस एरिया में लगता है कि दरवाजे खुल गए, सब रास्ते खुल गए, बिकॉज अब आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, आपको पीस आ गया. नाउ लेट्स मूव ऑन कि अपैथी एंड डिप्रेशन जो ये टॉपिक है हमारा, जो हमने शुरू किया था, ये क्या है, क्या प्राइस पे करना पड़ता है हमें इसको जब हम सेटल कर लेते हैं. जिन लोगों ने इसको अपना नेचर का सेकंड हिस्सा बना लिया, वो क्या इसका क्या भुगतते हैं और क्या फील करते हैं. These are the prices we pay for having settled for and brought into our smallness. मतलब इनके साथ ना आपकी ग्रेटनेस कभी बाहर निकलेगी. क्यों? बिकॉज आप डिप्रेशन में अच्छा काम कैसे कर सकते हो? खुद ही सोच लो, जबकि मुझे कुछ नहीं होता, अरे मेरे तो बस का ही नहीं है, होपलेसनेस है, डिप्रेशन है, तो हाउ विल यू एवर डू समथिंग बिग? It's what we have and we get for having played the victim and allowed ourselves to be programmed. It is a price we pay for having bought into negativity. It's what results from resisting the part of ourselves that is loving, courageous, and great. It results from allowing ourselves to be invalidated by ourselves and others. It's a consequence of holding ourselves in negative context. In reality, it is only a definition of ourselves that we have unwittingly allowed to happen. The way out is to become more conscious. So अगर हमने अपैथी को, होपलेसनेस को, मुझसे ये नहीं हो सकता, डिप्रेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना दिया, सो हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइस. हम नेगेटिव लोग हमें बोलेंगे नेगेटिव इंसान है, हर समय नेगेटिव बातें करता है, हर समय नेगेटिव बातें करता है. और अगर इससे हम नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रेजिस्ट कर रहे हैं हिम्मत से, लव से, ग्रेटनेस से. हम सिर्फ नेगेटिव बातें करे जा रहे हैं कि नहीं मेरे तो बस का नहीं, दूसरे का बस का भी नहीं, वो कितनी बार उसने ट्राई कर लिया, वो भी फेल हो गया, मैंने ट्राई कर लिया, मैं भी फेल हो गया हूँ. और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. और अब हमने इतना नेगेटिविटी कर लिया कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कैसे बाहर निकले, क्योंकि हम फंस चुके हैं नेगेटिविटी में. बट इसका जो तरीका है बाहर आने का, एक सिंपल तरीका है. हम कॉन्शियस हो जाएं, हम अवेयर हो जाएं कि हाँ मैं नेगेटिव दुनिया में फंस के जा रहा हूं. तो मिनट में कॉन्शियस हो जाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कहीं ना कहीं शिफ्ट आता है. क्या मतलब होता है टू बिकम मोर कॉन्शियस? लेट्स स्टार्ट विद दिस. Becoming more conscious means to start looking for the truth for ourselves. Instead of blindly allowing others to be programmed, ourselves to be programmed, whether from, without, or by any inner voice within the mind, which seeks to diminish and invalidate, focusing on that is weak and helpless. इसका मतलब हुआ, मैं अवेयर हो रहा हूँ कि मैं अपने आप को एक डंजन में भेज रहा हूँ, जहां पर सिर्फ घबराहट है, जहां सिर्फ नाकार कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हो सकता, ये भी अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, और मेरे तो बस का ही नहीं है, और मैं तो इतना पावरफुल ही नहीं हूँ, अरे मैं तो विक्टिम हूँ, ऐसे हुआ होता तो लाइफ में ऐसे हो चुका होता. ऐसे लोग जब अपने आप भागते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि वो नेगेटिव दुनिया में रहना चाहते हैं और वो उसको विश्वास कर लेते हैं, विक्टिम बन जाते हैं. इसका एक और आसान तरीका है. पहले हमने बताया हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम इस एटीट्यूड के अंदर फंस रहे हैं, और फिर हम क्वेश्चनिंग एटीट्यूड शुरू कर देते हैं, प्रश्न भाव शुरू कर देते हैं सब चीज के बारे में, कि मैं ऐसा हूं, मुझे क्या फायदा हो रहा है, किसी और को क्या फायदा हो रहा है. हम देखते हैं कि उस समय बॉडी में क्या रिएक्शंस हुए हैं.
जब आप नेगेटिव होंगे, आप देख लीजिएगा, या तो आपके बाल बहुत झड़ेंगे, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपका हाजमा खराब हो जाएगा, या सब कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर एक डिस ईज हो जाएगा, इजी नहीं होगे आप मेंटली, तो फिर बॉडी में भी उसका असर दिखेगा ही दिखेगा. There are many models of the mind. One of the most recent has been that of the computer. We can look at our mind's concepts, thoughts, and belief systems as programs. हमारे सब कुछ जो हमारे अंदर होता है, फाइल्स होती हैं हमारी सबकॉन्शियस माइंड में. सारी की सारी फाइल्स में कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम है, पैटर्न्स हैं. अब ये प्रोग्राम्स हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं ना, कैंसिल कर सकते हैं ना, रिवर्स कर सकते हैं ना. पॉजिटिव प्रोग्राम्स रिप्लेस कर सकते हैं नेगेटिव वंस को अगर हम चाहें तो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? संकल्प, इंटेंशन, विलिंग. हम चाहते, अगर सपोज मुझे बहुत गुस्सा आता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ तो गुस्से को कम कर सकती हूँ ना. ये तो नहीं कि एकदम से गुस्से को मैं लव में ले आऊंगी, बट मैं अपने आप क्वेश्चन कर देती हूँ, अरे बिना बात को मैंने स्टाफ पे चला दिया, या वाइफ पे चला दिया, या किसी और पे चला दिया. मैं अपने आप को थोड़ा बेटर कर सकती हूँ क्या? मैं रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ क्या? सोच सकता हूँ क्या? इंटेंशन है क्या मेरी? सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटेंशन. उसके बाद होती है चाह, विलिंग, करेज, हिम्मत. अगर हम चाहें, हम लाइफ में जो कुछ हमारी बॉडी में है, अंदर या बाहर, हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं. बस सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना कि क्या हम चाह रहे हैं. अब इसके लिए we have to look at the source of our thoughts, begin to identify the origin, and stop the vanity of labeling them as mine and therefore sacrosanct. We notice that thoughts can be looked at objectively. We see that the origins were often sir we see that the origins were often the early childhood training from parents, family, and teachers, as well as dribbles and drabbles of information we picked up from playmates, newspapers, movies, television, radio, church. चर्च का नाम इसलिए आता है कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी में, चर्च में जब हम लोग के सत्संग होते हैं तो वहां पर अच्छे दे टॉक अबाउट इट, तो वहां से कंडीशनिंग आती है. नॉवेल्स एंड ऑटोमेटिक इनपुट फ्रॉम आवर सेंसेस. तो ये बात हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी प्रोग्रामिंग होती है, जो भी थॉट्स होती हैं, वो थॉट्स कहीं ना कहीं से उसका एक बेस होता है. अब वो बेस हमारे बचपन में है, कि हमारे काम के एटमॉस्फेयर में है, कि हमारी टीचिंग की एटमॉस्फेयर में है, कि कहीं अखबारों में कुछ बोला है, कि समाज ने कुछ बोला है. कहीं ना कहीं से उसका एक बेस आता है. हमको उस बेस को समझना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बोला पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते, उस इंसान ने ये वाली लाइन बोली है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा था, उसने बहुत मेहनत करी तब जाके पैसे आए हैं, तो उसको लगता है कि जो इतनी आसानी से नहीं मिलते. और एक आदमी है जो बोलता है अरे पैसे में तो क्या प्रॉब्लम है, कभी भी आ जाते हैं. तो वो उस इंसान को पैसे की अहमियत क्यों लगता है, वो क्यों फ्लो करता है? क्योंकि उसको सीक्रेट पता है ना कि अरे इट्स नॉट सो टफ, सोचो और आ जाता है. कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उसके पेरेंट्स में भी होगा, कहीं उसने देखा होगा. All of this went on unwittingly without our having exercised any conscious choice. Not only that, but out of our unconsciousness, ignorance, innocence, naivety, plus the nature of the mind itself, we ended up as a composite of all the negative garbage prevalent in the world. So अगर आपके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी है, it's okay. है for some reason, उस reason को समझ सकते हैं तो very important, very good. नहीं तो doesn't matter. Furthermore, we concluded that it applied to us personally. हाँ, ये सब हुआ, मेरे साथ हुआ. Now, as we become more aware, we begin to realize that we have a choice. हाँ, मेरे साथ हुआ, पर choice तो फिर भी मेरे पास है. लोगों ने ऐसे बोला है. क्या मैंने वाकई में एक्सपीरियंस किया है, या मैंने जब एक्सपीरियंस करना चाहा तो मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग थी इसलिए से एक्सपीरियंस किया? क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करने का, इस समय सोच के कि अबंडेंस आएगी? इसलिए हम बोलते हैं थॉट्स एंड उसको इम्प्लीमेंटेशन. किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया? We can stop giving authority to all the mind's thoughts, begin to question them, and find out if there is really any truth in them for ourselves. ये थॉट्स में सच्चाई है कि नहीं है, या सिर्फ एक प्रोग्रामिंग की वजह से थॉट्स हैं?
अगर आप इतना भी अवेयर हो गए ना, हमारे अंदर एक शिफ्ट शुरू हो जाता है. The feeling state of apathy is associated with the belief I can't. apathy मतलब hopelessness, मुझे उम्मीद ना उम्मीदी. ना उम्मीदी में क्या होगा? I can't, नहीं मुझसे नहीं हो सकता. अब दिमाग को तो सुनना पसंद ही नहीं है. क्यों? बिकॉज दिमाग तो बोलता है हम सब कुछ कर सकते हैं. लेकिन रियलिटी में क्या है? आई कांट्स, आई वोंट्स इसलिए हो रहे हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग है. Now, the reason the mind doesn't want to hear this is because I can't is a cover up for other feelings. These feelings can be brought to awareness by posing the hypothetical question to oneself. Is it true that I won't rather than I can't? अपने आप से सवाल करना कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि मुझसे नहीं होगा, क्या यह वाकई में सच है? इसके नीचे ये फीलिंग है, ये फीलिंग है, ये फीलिंग है. क्या वाकई में ये फीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है या मैं चेंज कर सकता हूं? Is it true that I won't? Is it true that I can't? Is it true कि I can and I would? अपने आप से सवाल करें. जब सवाल करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी फीलिंग कैसे आ रही हैं. जब आप बोल रहे हैं हाँ मैं नहीं कर सकता, मैं तो बस की नहीं, तो एक फीलिंग आती है डिप्रेशन की, मूड खराब है. और हाँ मैं कर सकता हूँ, अरे ठीक है अब करूंगा, अच्छा अब ट्राई करूंगा. जब जागो तब सवेरा, ट्राई तो करो. एग्जाम्पल पढ़ते हैं ज्यादा समझने के लिए. Let's say we have a belief system that we can't dance. We say to ourselves, perhaps that's a cover up. Maybe the truth is that I don't want to and I won't. The way we can find out what the feelings are is to envision ourselves as going through the process of learning to dance. Simple चीज हमने कल पढ़ी है, वो आज हम पढ़ रहे हैं कि दिमाग बोलता है तुम तो नहीं डांस कर सकते. अच्छा ये क्यों फीलिंग आई मैं नहीं डांस कर सकता? बिकॉज मुझे बचपन में किसी ने बोला तुम्हारे तो 2 लेफ्ट पाँव है, तुम तो डांस बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है. या बाबूजी ने बोला कि आदमी लोग तो डांस नहीं करते, अच्छे नहीं लगते, कि अजीब से लगता है, सो मैं डांस नहीं कर सकता. लेकिन इसके नीचे फीलिंग्स कैसे आ रही हैं कि बाबूजी ने बोला, अरे मुझे उसने बोला कि 2 लेफ्ट फीट है, लेकिन मैं कर सकता हूँ कि नहीं वो मुझे पता है. तो मैं इमेजिन करूं अपने आप को डांस करते हुए, हैविंग ग्रेट टाइम, कि अपने आप को सीख रहा हूं मैं डांस करना. जैसा हम करते हैं, ऑल ऑफ द एसोसिएटेड फीलिंग्स नाउ स्टार्ट टू कम अप. एम्बैरेसमेंट, प्राइड, awkwardness, sheer effort of learning a new skill, and the reluctance about the time and all that is involved with it, which is energy. Now, as we replace I can't with I won't, we uncover all of these feelings which can be surrendered. ठीक है, अब मैंने डांस करना शुरू करा, अब मुझे साथ साथ में हाँ थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा हूँ, तो उतना अच्छा डांस लोग दिख रहे हैं, थोड़ा एम्बैरेसमेंट हो रहा है, लेकिन मैं इससे रिलक्टेंट नहीं हूँ. अब मेरी एनर्जी थोड़ी ऐसी लग रही है, लेकिन ठीक है मैं कर सकता हूँ, आज तो शुरू ही किया है मैंने, आई कैन डू इट. एकदम से लगेगा वी सी दैट लर्निंग टू डांस मीन्स दैट वी हैव टू बी विलिंग टू लेट गो ऑफ प्राइड. अगर डांस करना सीखना पड़ेगा मुझे, तो मुझे वो मन तो होना चाहिए, मंशा तो होनी चाहिए, विलिंग तो होना चाहिए कि मैं किसको छोड़ूं पीछे, अपनी झूठी इज्जत को या अपने अहंकार को या अपनी ऑकवर्डनेस को, या इतना कि लोग क्या बोलेंगे, छोड़ो यार एक बार करते तो है. We look at the cost and ask ourselves, am I willing to continue to pay this price? Would I be willing to let go of the fear of not succeeding? Would I be willing to let go of resisting the effort required? Would I be willing to let go of the vanity so that I could allow myself to be awkward as a learner? Could I let go of my stinginess and smallness and be willing to pay for the lessons and give the time? As all of the associated feelings are surrendered, it becomes very clear that the real reason is unwillingness, not incapacity. जब हम ये 4, 5, 6 सवाल करेंगे ना अपने आप से कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इज्जत को बाहर साइड में एक बार रख सकता हूँ, क्या मैं अपने आप को परमिशन दे सकता हूँ कुछ सीखने की, क्या मैं अपनी ये हैबिट को छोड़ सकता हूँ जो बोलता है कि नहीं ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल, कि तुम छोटे हो, तुम्हारा, क्या मैं इसको छोड़ सकता हूँ साइड में, क्या मैं जी सकता हूँ थोड़े अपने टाइम के लिए. तब हमें रियलाइज होगा कि इनकैपेसिटी नहीं है, कि मैं नहीं कर सकता वाली फीलिंग ही नहीं है. फीलिंग क्या है? मैं तैयार ही नहीं हूं करने के लिए. आधे लोग बोलते हैं कि वजन कम करना है, एक्चुअली तैयार ही नहीं होते वजन कम करने के लिए. उनको लगता है कि वजन कम करने का मतलब
कि मुझे ये खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, अच्छी लाइफ छोड़नी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग ऐसी सॉलिड हो जाती है कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पर कौन होती है, कौन करेगा? तो तैयार ही नहीं होते, मन होता है बट तैयार ही नहीं होते। अगर तैयार ही नहीं हो, मन ही तुम्हारा ढंग से सही चैनल पे नहीं है, कैसे आगे हिम्मत मिलेगी? इतना इंपॉर्टेंट है याद रखना, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी आर फ्री टू एक्नॉलेज एंड सरेंडर आवर फीलिंग्स एंड वी आर फ्री नॉट टू सरेंडर। चॉइस हमेशा हमारे पास है, करना है नहीं करना है, छोड़ना है नहीं छोड़ना, हमारे पास है। As we examine our icons and find out they are really I wounds, it doesn't mean that we have to let go of the negative feelings which results in the I wounds. We are perfectly free to refuse to let go. We are free to hang on to negativity as long as we want. There is no law that says we have to give it up. We are free agents. But it makes a big difference in our self-concept to realize that I won't do something is quite a different feeling than to think that I am a victim and I can't. सबसे इम्पोर्टेंट हमको सीखना है आज के चैप्टर में से कि जो हमने अपने आप को एक पिंजरे में बंद किया हुआ है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो उसको छोड़ना है। बिकॉज उस फीलिंग को हमें छोड़ना है, बिकॉज हम अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ब्लेम कर रहे हैं अपने आप को कि अरे आप इतने समर्थ नहीं हो। एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, वी कैन चूज टू हेट समबडी इफ वी वांट, वी कैन चूज टू ब्लेम देम, वी कैन चूज टू ब्लेम circumstances, but being more conscious and realizing that we're freely choosing this attitude puts us in a high state of consciousness and therefore closer to great power and mastery in being the helpless victim of a feeling. So बहुत इंपॉर्टेंट नहीं सर, हम ब्लेम नहीं पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। So बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हम सबके लिए कि चॉइस हमारे पास है। ब्लेम करना, अपने आप को विक्टिम मानना या कॉन्शियस होना, रियलाइज करना कि हमारे पास फ्रीडम है। विलिंगनेस है कि नहीं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी ग्रेट पावर है, हम अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं। सो वी आर व्हाट अ मैन थिंक्स, आपने कई बार कहावत सुनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। आज के लिए इतना ही। टुमारो विल टॉक अबाउट ब्लेम, कि हम ब्लेम क्यों करते हैं लोगों को या अपने आप को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है समझने का, बिकॉज लाइफ में 90% टाइम हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। ऑफ कोर्स अब आप सीक्रेट किताब से बाहर निकल चुके हो, अब आप ग्रेटफुल रहना शुरू कर दिया आपने, नाउ इज अ डिफरेंट फीलिंग, बट दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। नाउ लेट्स रीड द आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। Anybody wants to read that? You can raise your hand if you want to read Art of Creative Thinking. Okay. Becoming anonymous. When J.K. Rowling वो हैं जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी, अगर आपको पता हो तो, याद हो तो। J.K. Rowling जब वर्ल्ड के हाईएस्ट सेलिंग ऑथर बने, she stunned the book world by revealing that The Cuckoo Calling was her work, written under the pseudonym Robert Galbraith. Rowling said, I'd hoped to keep the secret a little longer because being Robert Galbraith has been such a liberating experience. Agatha Christie wrote 66 successful detective novels under her own name. She also wrote 6 romance novels under the name Mary Westmacott. Christie wanted to explore another genre without the baggage of her reputation pulling her down. Many novelists want to experiment with new genres. John Barnwell achieved recognition as a serious writer by winning the Man Booker Prize in 2005. Also writes crime novels as Benjamin Black to master identity. Julian Barnes is another Man Booker winning author, writes thrillers as Dan Cabna. A pseudonym gave them all the freedom to write without the shackles of their reputations and an opportunity to explore genres that are not generally taken seriously. लोग क्यों किसी दूसरे नाम से काम लिखते हैं? फ्रीडम चाहिए ना, कि अरे अगर मैंने लिखा है तो लोग के दिमाग में तो इस टाइप का काम लिखती है। एक फ्रीडम चाहिए, एहसास चाहिए, anonymity चाहिए। Robert Towne is a legendary Hollywood scriptwriter working behind the scenes on classics as Bonnie and Clyde and The Godfather, for which he didn't demand any credit. He mentored Jeremy Larner, who won an Oscar for writing The Candidate. I couldn't have written it without him, said Larner. Sometimes Towne was hired to write a script for which he knew he'd get the credit. Weeks and months would go by without a script materializing.
If Town was working anonymously, he worked freely and quickly. If he knew he was going to get the credit for a script, he suffered from writer's block. He kept rewriting, but the script didn't ever reach a conclusion. Eventually, he would be given a deadline. He wouldn't keep to it and was often dropped from the project. After working for years on a film called Greystoke, The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, Town became disillusioned and gave the credit for the script of his dog, P.H. Wozak. Wozak was the first dog nominated for an Academy Award for screenwriting. बहुत लोग क्रैकपॉट्स भी होते हैं, एनॉयमिटी भी एंजॉय करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं. क्यों कर रहे हैं ऐसा? Because sometimes it's good to put your ego in a box under the bed. There is freedom in being nobody. We live in a culture where everyone is obsessed with getting credits for every little thing they do. ये है कि नहीं है? कितने कम लोग होते हैं जिनको क्रेडिट नहीं चाहिए होता है कि अरे मैंने इतना डोनेशन किया, मैंने इतने यहाँ ये किया, मुझे नहीं चाहिए, या मैंने घर में खाना बनाया और कोई और कि सबको पता होना चाहिए कि मैंने बनाया, दूसरे ने नहीं बनाया. सबको रिकग्निशन चाहिए. लेकिन जब आप अनोनिमिटी में काम करते हैं, आपका ईगो को आप पैक ऑफ कर देते हैं. Many writers have written books using pseudonyms to give themselves the freedom to experiment and make mistakes. They don't want the credit for writing them. They simply want to enjoy writing. If we are not accountable for something, we work with freedom. We experiment in a way we would not normally have the nerve to. Sometimes our egos get in the way and tie us down in a fact that we are all not it. Because full of ego. उलझे हुए हैं अपने विचारों में, ये चल रहा है, विचार विमर्श, so much is going on. Now, working in anonymity will free you of others' expectations. But most importantly, हमको फ्री कर देता है हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस से. हमारी उम्मीदें जो अपने आप से होती है ना, सबसे ज्यादा पेनफुल वो होती हैं. अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, दूसरे से हल्का हो जाएंगे, अपने लिए बहुत टफ होते हैं. तो अगर आप anonymity में काम करते हैं, आप उससे फ्री हो जाते हैं. So of course, see for yourself कि आपको चलता है कि नहीं चलता, you know best. Cindy Clopper says, it's that anonymous person who meanders through the streets and feels what's happening there, feels the pulse of people who's able to create. आपने सुना होगा ना, इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, बाहर भी बहुत पॉपुलर. राजा महाराजा लोग अपने they used to become a normal आदमी बन जाते थे. They used to go in the गांव and the शहर and the kingdom to see कि क्या हो रहा है, लोग की बात सुनने से, पल्स फील करने से. कई बार जब आप अपना ईगो ड्रॉप कर देते हो, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी की चीज दिख जाती है. कई बार अगर आप anonymity का सहारा लेते हो, बहुत कुछ खुलता है जो हमको पता ही नहीं होता. जब हम फॉर एग्जाम्पल आज प्राची अग्रवाल if I'm going to my factory and checking on कि क्या हो रहा है, मुझे सच्चाई नहीं मालूम पड़ेगी. पर अगर मैं उनके बीच में घुल मिल जाऊं किसी तरीके से, तो मालूम पड़ेगा वो बॉस के बारे में क्या सोच रहे हैं, फैक्ट्री के बारे में क्या सोच रहे हैं, काम के बारे में क्या सोच रहे हैं. कई बार anonymity is a good idea. हर समय प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर कर लें तो nothing like it. Okay, lovely heart thought, very much similar to what we are learning. So anybody wants to read? मनीष, कल आपने हैंड रेज किया था, आपको आज पढ़ना हो तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए. Releasing the cause. Amit. Yes, Amit. Thank you. I'm willing to release the need for this condition. Take a nice deep breath and release the resistance. Resistance जिसके लिए भी हम resist कर रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए take a nice deep breath. And again, वही most important word, I am willing to release the need for this condition. Yes, Amit, please read. I am willing to release the need for this condition. No matter how long your negative beliefs have been in your subconscious, affirm now that you are free from them. Affirm that you are willing to release the causes, the pattern in your consciousness that are creating any negative conditions in your life right now. Affirm that you are now willing to release the need for these conditions. Know that they disappear, fade away, and dissolve back into the nothingness from whence they came. The old garbage no longer has a hold on you. You are free, and so it is.
कैसा फील होगा ना अमित, थैंक यू फॉर रीडिंग, कैसा फील होगा ना सारी पुरानी ब्लॉकेज जिसको बस गिरा दिया हमने, जस्ट रिलीज कर दिया एंड लाइफ नए तरीके से शुरू कर रहे हैं. सो व्हाट इफ आई एम 20 30 40 50 years 60 70 80 years old, so what? आज भी आई कैन स्टार्ट माई लाइफ द वे आई हैव वांटेड टू, बिकॉज अब मैं अपने आप को वाइट क्लीन कर चुका हूँ, एक ब्लैक बोर्ड को मैं पूरा साफ कर चुका हूँ, नई कहानी लिखूंगा. हाउ डज इट फील? लिबरेटेड. एंड दैट्स हाउ ऑल ऑफ अस आर. हर दिन को हम नए तरीके से लिख सकते हैं, हर सुबह नया सवेरा होता है, रात को रात होती है, विच मीन्स दैट्स इवन नेचर बता रही है कि हर आपको सुबह एक नई शुरुआत मिलेगी ही मिलेगी ना. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है. Okay, let's meditate on letting go. All right. So today we don't have Shivani and Akshay both to record, and that's fine. आपके पास ये meditation आज है session में. Sessions are available on YouTube, so आप वहाँ से कर सकते हैं if you really want to do it again. But अभी तो करेंगे. So let's take a deep breath in. And out. प्रतिमा जी आंखें बंद करिए. Another deep breath in. And out. In. Out. Life is magical. Life is acceptance. Life is about letting go. Our life gives us a new beginning every other day. It is upon us to live the life of our dreams. As we have grown up, we have learned precaution. We have learned caution. We have learned that negative things arise in life. But it's also upon us to realize that if the programming has been made in our life, it was written for some reason, with some guidelines. All of us can rewrite our life. Let's imagine writing the book of our life in a new journal. Let's invoke all the energy of all the angels, all the guardians, of all the gods, goddesses, divine beings, teachers, coaches, authors, whoever, parents. And let's start writing that today is the best day of my life. आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है. तो आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ? Let me imagine and let me write that down. Take your time, think about it. क्या लिख रहे हैं? आपके सामने आपका जर्नल है, आप अपने आज बेस्ट दिन है क्या लिख रहे हैं आज के बारे में? फैमिली, प्रोफेशन, जो भी, हेल्थ, सेहत. जिन लोग को मनी का डर रहता है, वो सोचे मैं कुछ भी कर लूं, पैसा तो आएगा ही, वो तो रुकता ही नहीं है, आएगा ही आएगा. जिन लोग को वजन की प्रॉब्लम लगती है, वो सोचे मैं कुछ भी खा लूं, वजन तो जाएगा ही जाएगा. जिन लोग को लगता है कि लोग उनसे उतना प्यार नहीं करते, वो सोचे मैं कुछ भी बोल दूं, लोग तो प्यार करेंगे ही करेंगे. क्योंकि इस समय हमने पास्ट को वाइप आउट कर दिया, हमने लेट गो कर दिया. जो हुआ था वो पहले हुआ था, वो आज सत्य नहीं है.
हम एक दुनिया में हैं विद एन एहसास के साथ हैं दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल. We are the creators. We are the artists who choose the colors we want and paint the canvas of our life. So now today is beautiful. How about now next coming life? What do we want from our life? Think about it. We all want to be loved. And we all know to be loved, we must become channels of love. हमें सब में पॉजिटिविटी दिखे. हम जब सबको लव देंगे तो हमें भी लव मिलेगा. हमें लाइफ सब कुछ क्लियरली दिखना है. टिंटेड ग्लासेस जो हमने गॉगल्स पहन रखे हैं, ग्लास पहन रखे हैं, उनको हम ड्रॉप कर दें. अभी तक हम दुनिया को देख रहे थे एक नजरिए से जो हमें सिखाया गया था. बट नाउ वी ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ. सब लोग मेरे लिए अच्छा करने के लिए आए हैं. लाइफ इज फॉर मी. अच्छे लोग मिलते हैं सिखाने के लिए, अच्छे लोग मिलते हैं लाइफ में ठहराव लाने के लिए, अच्छे लोग मिलते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. तो किस बात का डर है मुझे? व्हाई एम आई स्कैर्ड? हमें रिस्पेक्ट चाहिए, आदर चाहिए, बच्चों से, समाज से. रिस्पेक्ट तो मिलेगी अपने आप. जब मैं अच्छा बनूंगा, अच्छा बात बोलूंगा या बोलूंगी तो मिलेगी ही रिस्पेक्ट. डाउट किस बात का है मुझे? किस बात का डर है कि लोग बदतमीजी करेंगे? क्यों करेंगे? अगर मैं तमीज में रहूंगा तो लोग भी रहेंगे. तो मुझे अपना नजरिया बदलना है. जो मैं बाहर खोज रहा हूं, मुझे अभी अपने अंदर है मेरे, मुझे पता है. उसको खोजना है. मुझे पैसा चाहिए तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा. जब अच्छे कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, आर्टिस्टिकली काम करूंगा और जो पसंद है उसके बारे में काम करूंगा, पैसा तो मिलेगा ही. हाँ, इतनी जरूर बात है कि अब मुझे डिवाइन गाइडेंस चाहिए. सो मैं अपने आप को बोलूंगा डिवाइन गाइडेंस इज ऑलवेज गाइडिंग मी, चैनलिंग मी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन ऑटोमेटिकली. और इस समय भी अपनी प्रोग्रामिंग को देखूंगा मैं. दिमाग में क्या चल रहा है? डाउट है, डर है कि पैसे डूब जाएंगे. क्यों? क्यों डर है मुझे? मुझे पता है जिस एनर्जी पे मैं बात करता हूँ वो एनर्जी यथार्थ में आ जाती है. सो अगर मुझे नेगेटिविटी है तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने फ्यूचर में अपने आप को देखना है जहां सब कुछ जैसे मैं चाहती हूँ वैसे हो चुका है. और फिर फील करना है कि क्या मुझे फीलिंग आ रही है. What am I feeling? I love everyone. Everyone loves me. I share my intelligence and I get to learn also. अच्छे टीचर्स मिलते हैं, कोचेस मिलते हैं, लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ये मुझे सीखना ही सीखना है. अब टीवी देखने की जगह मैं किताबें पढ़ता हूँ या मैं अच्छी बातें सुनता हूँ. आजकल सब कुछ ऑडिबल पे किताबें हैं, यूट्यूब पे इतने सेशंस हैं, कुछ भी सुन सकता हूँ मैं. मुझे टाइम क्यों वेस्ट करना है? मैं वॉक करने भी जाता हूँ तो मेरे कान पे मेरे ब्लूटूथ लगे रहते हैं, मेरे एयरपॉड लगे रहते हैं और मुझे जो सुनना है मैं सुन सकता हूँ. मुझे टाइम वेस्ट क्यों करना है? या मैं अपने आप से बात कर सकता हूँ कि वाह, लाइफ इज मैजिकल, लाइफ इज ब्यूटीफुल. या मैं कृतज्ञता के 100 कदम चल सकता हूँ. हर समय धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. शुरू में टाइम लगता था धन्यवाद बोलने में, अब ऑटोमेटिकली आता है. मैं कंप्लेन करना बंद कर सकता हूँ. मैं अप्रिशिएट करना शुरू कर सकता हूँ. मैं अपना नजरिया बदल सकता हूँ. मैं अपने फियर को लेट गो कर सकता हूँ, अपनी कंडीशनिंग को लेट गो कर सकता हूँ. बिकॉज आई एम अ पर्सन हु इज चेंजिंग एवरी सिंगल डे. आई एम फुल ऑफ promises. I'm full of life. I know I'm magical. I know whatever I want in my life, I will get. अभी तो लिखा है मैंने अपनी किताब में कि मुझे लाइफ कैसी चाहिए. दोबारा उस पन्ने को पढ़ें जहां आपने अभी लिखा है. माइंड में पन्ना लिखा है, वहीं दोबारा पढ़ें क्या क्या लिखा है आपने. एंड फील करें क्या क्या लिखा है आपने. उसको फील इट. कैसी फीलिंग आ रही है? चेहरे पे मुस्कान आ रही है देख कर कि आपका सपना साकार हो चुका है? हाउ डज इट फील?
आप मानवता के कल्याण में लगे हुए हैं क्योंकि आपके पास इतने सारे पैसे हैं अपने खुद के एंडेवर से, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। कैसी फील आ रही है? उन लोग के चक्रों पे स्माइल आ रही है। जिस भी रूप का हेल्प करनी है आप वो कर रहे हैं। आप जहां चाहते हैं वहां हॉलिडे कर रहे हैं, और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप पे कर सकते हैं पूरी की पूरी हॉलिडे का, खाना पीना रहना उड़ना जाना सब कुछ। हाउ डज इट फील? और सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं आपको कि वाह आप क्या बढ़िया हॉलिडे पे लाए। मनपसंद खाना खा रहे हैं, वजन भी नहीं बढ़ रहा बिकॉज आप तो इतना, व्हेन यू लव एंड लाइट वजन क्यों बढ़ेगा? बॉडी को अपने आप पता है, इंटेलिजेंट इतनी बॉडी है कि अब क्या खाना है कब क्या नहीं खाना। और अब आप बॉडी की बात सुन रहे हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि हमने सुनना बंद कर दिया था। नाउ वी आर ट्यून्ड इन, वी आर लिसनिंग टू आवर बॉडी। एंड द बॉडी इज स्माइलिंग। थैंक यू, फाइनली तुमने सुना तो सही मुझे। मुझे अभी खाने का मन था, तुमने दिया। मुझे कुछ भी नहीं खाना था, तुमने नहीं दिया। मुझे पानी पीना था, तुम आधी बार सोचते हो कि पानी नहीं भूख है, पर मुझे प्यास लग रही होती, तुमने सुना मुझे। और मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, मूवमेंट करना पसंद है, तुमने मेरी बॉडी में दर्द करके रखा है बैठे बैठे बैठे। तुमने सुनना शुरू तो किया मुझे। थैंक यू डियर बॉडी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर लाइफ फॉर बीइंग मैजिकल। एंड नाउ लेट्स बी सो ग्रेटफुल, लेट्स फोल्ड आवर हैंड्स एंड बी सो ग्रेटफुल। जो भी हमने सपने देखे, जो भी हमने फील करी अभी, उन सब के लिए अपने परमात्मा को, हाईएस्ट पावर को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने दिल को, अपने कॉन्शियस माइंड को, सबको धन्यवाद देते हुए टेक द ब्लेसिंग्स, फील द ब्लेसिंग्स एंटरिंग यू थ्रू क्राउन चक्र। कॉस्मिक एनर्जी की तरह आपकी बॉडी के अंदर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फील देम। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। और इस फीलिंग के साथ let's thank our wonderful body for the energy, for the pran, and let's bless each other with the Lord of love and light. May everyone's dreams come true the way mine have come true in this beautiful morning meditation of mine. The way I felt, let everyone feel good. Lots of love, light, and blessings, Amit, Peena ji, Pratima ji, Manisha, Hitendra ji, Manish, Nikita, Surinder ji, Usha ji, Dr. Kamakshi, Vijay ji, Richa, Shami, Shivani, Rahul sir, Amita ma'am, Meenakshi, and to all the virtual participants. Lots of love, lots of light. May everyone's dreams come true. May everything be beautiful. May everything be amazing. And may we all learn to let go. Let go, let go, let go. Lots of love and light. Be blessed. Let's see each other tomorrow at 5. Thank you, thank you, thank you.